All right. I guess we are live. Let me check if we are live. Just a second. Anyways, I'm 2 minutes early. Okay. Done. Great. So, good evening. A second, I guess there's a lag. Okay, speed is perfect. All right. Today's session is going to be on profile building tips. For those who don't know me, my name is Ankusha Patil, and I would definitely reiterate this because since it's just 9:28 and our session was scheduled at 9:30, we are still 2 minutes to go to start this session, and I would definitely patiently wait for all of you to join in the session. So, yes. If you guys have your friends who are waiting for this session, you can share the link with them or remind them. Yeah. Great. Hi, Ray. Hi, Ayush. Good evening, Ayush. Good evening, Ray. Ayush is always on time, no matter where do I take my session, but he's always on time. I really like your punctuality, Ayush. Good. Keep that up. It would really help you. That's really nice, and thank you, thank you, thank you. Just give me a minute, right? Just give me a minute. You know what just happened? So for the first time, I told my dad that, I'm going to be live on YouTube. So what he did was he clicked on my link on the television and this live was on full volume. तो ऐसा हो रहा था कि I was speaking there, here, and my voice was audible, जो भी मैं बोल रही थी. So yeah, my dad is super excited for everything that I'm doing. Every time, I can't match his energy at all. Yeah, so we have more people who have joined in. We have Adil who have joined in. Good evening, Adil. We'll wait for one more minute and we'll start this session. Yes. Also, meanwhile, people who have already joined, let me know if there are any specific sessions that you want from my end. I'll definitely look into it, and if possible, I'll schedule a session for the same as well. Cygnus वाले मैम आपकी फोटो लगा के एडवर्टाइज कर रहे हैं. Yeah, I know Giri sir and Ganeshan sir. So yeah, I did my GDP. I gave them few mocks, your interview mocks in Cygnus. And I've taken guidance from Giri sir a lot while I was preparing for CAT, and also he helped me with my interviews and everything. So yeah, I mean, I had a particular session with him wherein he, went through all my entire profile and he told me how to answer, what to go ahead and what to do and what not to do. So yeah, maybe that's why. But anyways, it's fine. My picture is there, my photo is there. I'm happy with that. By the way, I was already aware about this, Ankit. Query from my end. Okay, Adil, tell me. We'll take the query for one more minute. We have 8 people who have joined this session, which is pretty okay. And ma'am, आप किस subject पर master कर रहे हो या हो? So VRC is something that I like, and QA also I used to like. Yeah, while I was preparing for CAT, I have spent a lot of time in QA. All right, I guess that's enough, and let's start the session. So, they'll have a question. Opportunities for people with family business work experience in IIMs. No, there are no specific opportunities for people who come from business background. Hey Ankusha, how are you doing? I'm good, Parag. How are you? Welcome to the session. All right. So
We'll take up all the questions or doubts that you have simultaneously. And if you have any doubt which is not related to the session, what we'll do is please save all your doubts which are not related to the session, and I'll take that up towards the end of the session. As simple as that. बाकी simultaneously अगर आपको मेरे बोलते हुए कुछ doubt आता है, you can definitely shoot your doubts and I'll be more than happy to answer to your doubt. ठीक है जी? Is everyone with me? Let's start. Ankit has to say something. Ankit is saying maths तो मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें? सब समझ आ जाएगा, don't worry. Ankit, are you there in Unacademy? Because there I get a lot of time to interact with people and solve all their doubts. But since this session is specifically on profile building, I would like to start the session because it's already 9:32. So we are 2 minutes into the session. So let's start this. And as I said, कि कोई भी दूसरे डाउट है, I'll pick that up towards the end of the session. ठीक है जी? All ready? Great. Fine. So this session is about profile building tips, wherein if you're someone, you know, at the same point, if you're worried कि you have not done well until today, or your CV is blank, you don't know how to build your profile stronger. If you have such things in your mind, then this is a session that you should definitely attend and watch till the end, because I'm going to be sharing with you a lot of sources through which you can build your profile really strong. For those who don't know me, my name is Ankusha Patil. I am a student at IIM Rohtak, and soon I will be happily graduating. And also I am a YouTuber with 14k plus subscribers. I vlog about IIM life. I used to vlog about that, but now that I'm graduating, I'll vlog about how life is post IIM. ठीक है जी? As I DM you about benefits of MBA, remember, I am not able to recall that, Parag, but I'll see. I'll check on that. ठीक है जी? All right. So for today's session, the table of content is first, why profile building is important. Why do you even give it a thought कि यार you should be focusing on profile building, जबकि already you have so much on your plate. Plate में क्या क्या है? VRC है, quants है, DILR है. Then why do you want profile building also to be one of the thing that is important for you? I'll give the answer to the why. Second, I'm going to be talking about what includes profile building. ठीक है, मतलब profile building को मैंने कुछ parts में divide कर दिया है. Majorly जो parts होते हैं profile building के. ठीक है, I am going to discuss about those in detail. Thirdly, to build a strong profile, LinkedIn nowadays come into picture. How? Because LinkedIn is a social media platform which is used by professionals. And now that you're preparing for CAT, तो आपका मतलब I am inferring, ठीक है, it is implied to be that you want to enter the corporate world. So when you're willing to enter the corporate world, that is when you are required to make a LinkedIn profile. I made my LinkedIn profile when I got admitted into IIM Rohtak, but by then I was not even aware about this platform. But if I would have made my profile way back and I would have done things that I am going to suggest to you, I would have had a better and a stronger profile for sure. And that is why having a strong LinkedIn profile is really important. Why it is important, we'll discuss about that in detail as well as we move further, right? Fourth, I'm going to be talking about some of the certifications you should be doing and why you should be doing those certifications and why it is important that you should do few certifications before you enter your MBA life. ठीक है? I guess इतना सबको clear है, and let's move forward. All right. So when we talk about profile building, if you are someone who is just pass out, right, मतलब जिसने सिर्फ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आपके लिए मेन मोटिव ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग के 3 ही हो सकते हैं. फर्स्ट इज योर गेटिंग इनटू योर ड्रीम कॉलेज. इसको मैंने फर्स्ट इसलिए रखा बिकॉज सिंस वी आर हियर टू प्रिपेयर फॉर कैट, तो आपका फर्स्ट इंटेंशन यही होगा टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज. Second, if you're someone who wants to get a dream job, ये कब आएगा? Once you get into your dream college, आप कब कहाँ पहुंच जाएंगे? SIP process के. SIP is what? Summer internship process में. ठीक है? उस preparation में, summer internship preparation के time पे, you will be willing to build your profile stronger. Why? Because you want to get into your dream job or a dream company. ठीक है?
Thirdly, there are people who will be done with both these things. मतलब कि for example, you got into your dream college, उसके बाद you got a good summer internship program also. But अब क्या? अब it is important for you still to build your profile for your personal branding. And you will realize the importance of personal branding once you start investing your time into it. I've realized it little late, but now that I've realized it, I'm putting in a lot of effort or much effort because I've seen the results that it can give. And also, MBA is something which will give you an idea about how important it is to build a personal brand. ठीक है? All right. Coming to प्रोफाइल बिल्डिंग को हम लोग बहुत ही आसानी से 4 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज को-करिकुलर्स वो चीजें होती हैं जो आपकी पढ़ाई के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है. सेकंड कम्स योर पीओआर का फुल फॉर्म है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हो जाती है. स्कूल्स में जो हम हाउस हेड्स होते हैं या हेड बॉय होते हैं, हेड गर्ल होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनसे भी हमारा प्रोफाइल बिल्ड होता है. थर्ड थिंग इज एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस में बहुत टाइप के एक्सपीरियंस आ सकते हैं. नॉर्मली जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की तो सबको ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट फुल टाइम वर्किंग इंडिविजुअल्स. नो, दैट इज नॉट द केस. एक्सपीरियंस के अंदर और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में सेशन में बात करेंगे. फोर्थली, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्स्ट्रा को-करिकुलर्स. मतलब अपने पढ़ाई के अलावा जो चीजें होती है लाइक हॉबीज, है ना, और भी जो चीजें होती हैं, I will be talking about that in detail. Through all these 4 things majorly, you can build a skill when you are here to get into your dream college. ठीक है. क्योंकि आप अगर अपने ड्रीम मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी आप जा रहे हैं, राइट, तो अभी आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन की पहले वाली चीजें ही पूछेंगे और पहली वाली चीजों में ये 4 चीजें ही इंपॉर्टेंट है. इफ यू वर्क ऑन दीज 4 थिंग्स, you're done and dusted. Are you guys with me? Give me thumbs ups or give me yes or whatever you want to, so that I should just know that you guys are alive. Great, awesome. I'm so happy with the number of audience that we have joined. Yeah, great. If I'm too fast or something like that, do let me know. ठीक है. Great. So coming to the first topic, that is co-curriculars. Co-curriculars में सबसे पहले तो guys, if you're someone who has done CFA, मतलब CFA level 1, level 2 clear किया हुआ है, या if you're someone who is a CA, या if you're someone who was a doctor, क्योंकि देखो MBA की जब बात आती है, it is important for all of you to understand कि MBA सिर्फ एक BBA ग्रेजुएट इंसान नहीं करता है. MBA में अगर आप एंटर करेंगे तो you'll have, specifically when you talk about IIMs, there's a huge diversity there. You'll find doctors in your batch, you'll find lawyers in your batch, you'll find people who are CA, you'll find people who will be still pursuing, what they will be doing their CFA level, clearing CFA level. Then there will be a lot of people from commerce background and so on, science background, engineers and so. So if you have any kind of professional course like CFA, CA या कुछ, तो that is very important for you to mention. तो suppose for example, let's take an example कि आपका ना अब हम लोग इस सेशन में CV बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. CV बिल्ड करने में सबसे पहला जो सेक्शन आ रहा है आपका वो है को-करिकुलर्स का. तो को-करिकुलर्स में सबसे पहली चीज मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, so you have to add that. ठीक है जी. Second, there are life projects. Now, before entering into an IIM, I did not knew what are life projects. So let me explain कि इसका मतलब क्या होता है. Life project are a kind of internships, but in most times these are not paid. ठीक है. Let's say for example, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके कुछ फैकल्टीज होंगे. फैकल्टी को अलग अलग रिसर्च पेपर पे वर्क करना पड़ता है, राइट. एटलीस्ट इन IIMs तो ऐसे ही होता है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट इन टच विद फैकल्टीज ऑफ योर चॉइस, विच whom you idolize और whom you think कि हाँ ये फैकल्टी काफ़ी अच्छे रिसर्च पेपर लिखते हैं. And so you can contact them, you can tell them कि sir I can assist you in your research project. तो इस तरीके से you can assist them, so that assisting part will be your life project. Why it is a life project? Because you're working on some project. ठीक है जी.
It's hard to find internship. Shivani, I'll tell you how you can find internship. Just wait. I want to go for professional courses but can't prepare CAT and course together and give my best, as both require rigorous preparations. पहली बात तो एमी, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड अदर्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. देखिए, जिनके पास अब तक कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, इट इज कंप्लीटली फाइन. आई एम जस्ट आस्किंग पीपल हु ऑलरेडी हैव अ प्रोफेशनल कोर्स कि वो इस चीज को जरूर मेंशन करें, बिकॉज इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स. ठीक है, इट इज अ गुड पॉइंट इफ यू हैव इट इन योर प्रोफाइल. दैट वॉज माई ओनली इंटेंशन. मैं भी यहाँ पे बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ आप लोगों को कि आप क्या बोलते हैं अपना कैट की प्रेपरेशन छोड़ के अपना प्रोफेशनल कोर्स पे ध्यान दें. ठीक है जी. Oh, there's a lag. Let me check my internet connection. Just give me a second. Just give me a second. It's okay. It's not that bad, guys. I guess it's fine. It's a little slow, but I guess it'll work. Hello. Hi, Alicia. Yeah. I guess now it's fine, and let's come back. Yeah. Awesome. Fine. Great. Fine now. Great. Okay, Ayush. Yeah. ग्रेट. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द लाइफ प्रोजेक्ट्स. तो मैंने पहला आपको क्या सिंपल सी चीज़ बताई कि आपको क्योंकि फ्री में करना है, आप किसी फैकल्टी को कॉन्टैक्ट करो, उन्हें कहो कि सर अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आई वुड लव टू असिस्ट यू. ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई. दूसरी लाइफ प्रोजेक्ट कि आप ना सिंपल फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल है. आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन. इफ नॉट, आई टेल यू हाउ टू बिल्ड योर प्रोफाइल. लिंक्डइन इज द बेस्ट सोर्स टू गेट लाइफ प्रोजेक्ट. वहां पे जाके सर्च पे डालो टैलेंट एक्विजिशन, सर्च पे डालो HRs एंड जो भी कोई कंपनी, इफ यू हैव एनी कंपनी और समथिंग लाइक दैट, उस कंपनी का नाम डाल दो. ठीक है, और उसके बाद यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ HRs ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. उनको पर्सनलाइज टेक्स्ट भेजो दैट सर, इफ यू सर और मैम, इस तरीके से आप टेक्स्ट लिखो कि सर और मैम, इफ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर अ लाइफ प्रोजेक्ट और if you're working on any product, I will be happy to assist you. So things that you can provide from your end can be कि आप कुछ PPT बना के उन्हें सेंड कर रहे हो. ठीक है, या आप उनके रिसर्च वर्क में उन्हें हेल्प कर रहे हो, या अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से you might be helping them to increase the content that they have on the website designing में help कर रहे हो, या उनके blog लिखने में आप help कर रहे हो. So there are numerous ways in which you can do this. ये जो जो असिस्टिंग वाला जो पार्ट है, दैट कम्स अंडर दिस लाइफ प्रोजेक्ट. क्या इतनी मेरी बात समझ में आती है आपको? ऑल्सो अपने दिमाग से ये चीज हटा दो गाइज कि इफ यू डू लाइफ प्रोजेक्ट फ्रॉम अ गुड ब्रांड ओनली देन इट मैटर्स. नो, लाइफ प्रोजेक्ट की सिंपल चीज सिंपल मोटिव यही होता है दैट कोई ऐसे प्रोजेक्ट में आप कॉन्ट्रीब्यूट करो which is adding value to the company, and with the help of that you are also able to learn something. That is it. क्या मेरी इतनी बात क्लियर है सबको? आयुष, ग्रेजुएशन हो गया क्या? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो? ओके, फाइन. मेरा बीकॉम थर्ड पार्ट का एग्जाम डेट आ गया है, अभी क्लास नहीं कर पाऊंगी. ऑल राइट, नो प्रॉब्लम अरीशा, नो प्रॉब्लम. Yeah. So secondly, I'll come to the internship wala part. Internships are actually very, very important. Why it is an important factor for you to, for you to consider when you're thinking about profile building? Because ये आपको real time experience देता है of the corporate world. ठीक है, यहाँ पे आप असिस्टेंट नहीं है. अब देखो, लाइफ प्रोजेक्ट में you're kind of assistant वाला वर्क, but internship में you're not an assistant. Rather, you are a part of the project. समझ में आ रही है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ स्मॉल स्टार्टअप, like I'll give you my own example. So I did this internship with a small startup of Indore, Carrygo. तो दिस इज अ कंपनी जो कि कैरी बैग्स बनाती है बेसिकली. तो वहां पे मेरा काम पता है क्या था? I was a part of the team. So I was part of the team of the market. I was a part of marketing team. So what I used to do is,
पहली चीज तो आई यूज टू जनरेट लीड्स मतलब कि जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं ना उनका आई यूज टू जनरेट लीड्स. आई यूज टू हैव एक्सेल्स, तो आई डिड दैट वर्क. सेकेंडली आई यूज टू सेंड मेल्स टू दोज जनरेटेड लीड्स. थर्डली आई हेल्प देम विद द डिजिटल मार्केटिंग कि किस तरीके से पोस्टर्स बनाए जाए, किस तरीके से लाइन्स यूज करी जाए, है ना. और फोर्थली आई हेल्प देम विद द गूगल एडसेंस बिकॉज आई हैड अ यूट्यूब चैनल, सो आई हैड अ सेंस ऑफ हाउ दीज गूगल एड्स एंड एवरीथिंग वर्क्स. तो आई हेल्प देम विद एडवर्टाइजिंग. Then I help them with different social media platform as well. So I felt like I'm a part of that company. And since it was a startup, मेरे को बहुत सारे पावर्स दिए हुए थे. आई वॉज गिवन कंप्लीट फ्रीडम कि अंकुशा आपको जो पसंद आए, जैसा पसंद आए, you can experiment, you can do. So I had that complete liberty as well in that internship, and that is very very important. So it does not matter from which brand you do or with which brand you do your internship. Rather, it is important that if you're doing an internship, you should have some takeaways. ठीक है जी? All right. देन फोर्थ कमिंग टू स्कॉलरशिप्स. अब स्कॉलरशिप्स के बारे में को करिकुलर में कभी कोई सोचता नहीं है, बट स्कॉलरशिप सिर्फ जो एकलव्य स्कॉलरशिप्स होती हैं या छोटी छोटी जो स्कॉलरशिप होती है, एवरीवन इज अवेयर अबाउट, राइट. और स्कॉलरशिप्स जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप दैट आई हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है बच्चों को. यू कैन मेक यूज ऑफ दो स्कॉलरशिप जिससे आपको भी फायदा होता है. और अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है थ्रू अ टेस्ट or if there is any eligibility criteria and you fall under that eligibility criteria, अगर आपको उसके थ्रू एक स्कॉलरशिप मिलती है, so do mention about that scholarship as well. It will add on brownie points because scholarship सबको नहीं मिलती है, right? Coming to the next point, that is Olympiads. Olympiad की जब बात होती है ना guys, it will get I'll just wait. I don't know why, but there's a lag today. I'm so sorry guys for the lag. Oh, shall I disconnect and connect again? What to do? Fine. Okay. From IPM course, I will not suggest both. Please do not go for IPM to colleges like IIM Bodh Gaya or IIM Jammu. Sorry for being very, very straightforward. But yes, even my own brother is preparing for IPM. And the only college that I want him to target is IIM Indore. So, from my end, तो एक ही college होना चाहिए. That is IIM Indore. ठीक है जी. Hi Satyam. Hi. Great. I think Alok has his answer now. Yeah. Do let me know if the co-curricular slide is visible to you all, and then we can continue. Right? Just give me thumbs ups and I'll get an idea. I was youth president in my district for government organization named Rashtriya Sainik Sanstha. I have a certificate, so can I add it in my CV? Yes, you can add. ये position of responsibility में आप add कर सकते हैं पराग. ठीक है? Do let me know क्या मेरी co-curricular की slide आपको सबको visible है? अगर visible है तो please give me thumbs ups or say yes or whatever suits you and we'll move forward. So I was talking about Olympiad actually. So I wanted to continue, but पहले बता दो आप लोग की विजिबल है या नहीं है. ओके, सो दैट्स थम्स अप. थैंक यू. रेडिन नब. ओके, फाइन.
ओके फाइन. सो कमिंग बैक टू ओलंपियाड्स. ओलंपियाड देखो, जब जैसे ही हम ये वर्ड के बारे में सुनते हैं ना, तो वी थिंक कि ओलंपियाड्स तो स्कूल में होते थे, है ना, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड एंड सो ऑन. बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे ओलंपियाड्स कॉलेज लेवल पे भी होते हैं. तो आई एम अज्यूमिंग कि इफ़ यू आर कॉलेज स्टूडेंट, है ना, अपना ग्रेजुएशन परस्यू अगर आप करेंटली कर रहे हो, तो स्टिल यूर eligible to participate in Olympiads. Olympiads अगर आपको चाहिए भी, तो there is a platform by the name Dare to compete. वहाँ पे बहुत सारे case competitions भी होते हैं in which you can participate since you're a college student, and also there are scholarship tests or there are Olympiads which are being conducted जिसमें आप participate कर सकते हो. ठीक है जी, great. Coming to the next point, that is languages. अब लैंग्वेज देखो, मैं दो टाइप की लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ. पहले तो कौन सी लैंग्वेज, हमारी बोलने चालने वाली जो लैंग्वेज होती है, राइट, है ना. सो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड इफ यू नो अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, यू नो. सो कोई भी ऐसी लैंग्वेज, फॉर लेट्स से यू लाइक स्पेनिश, ठीक है, और यू हैव सम व्हाट शुड आई से कि थोड़ा सा आपका बायसनेस है स्पेनिश की तरफ, और यू नो, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड लर्न दैट लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेजेस जितने सीखोगे इट इज गुड फॉर यू. सेकेंडली, सेकेंड टाइप की लैंग्वेज कौन सी होती है, जो आपकी टेक्निकल लैंग्वेज होती है. लेट्स से आपका जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया. तो इफ यू समवन हु इज एन इंजीनियर, तो आपको तो शायद पहले से आती ही होंगी. बट इफ यू नॉट डन इंजीनियरिंग, बट यू नो यू आर अ टेक पर्सन, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड लर्न दोज लैंग्वेजेस, बिकॉज उन चीजों को फिर आप अपने को करिकुलर्स में ऐड कर पाएंगे. ठीक है जी, ऑल राइट. कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट नहीं होता है. ऑल राइट, आई गेस आयुष एंड अलीशा आर बिजी टॉकिंग. ओ ये विष्णु, ओ थैंक यू विष्णु, थैंक यू. ठीक है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज रिसर्च पेपर. अब रिसर्च पेपर, see, this is specifically for people who are into research or who like researching, right? तो research paper आप कैसे अपना खुद का लिख सकते हो. basically I participated in a paper presentation competition while I was graduating from Bhopal School of Social Sciences. तो वहाँ पे there was a contest जिसमें they gave क्या बोलते हैं, एक topic and they told everyone to research about it. So we researched about it. उसमें बहुत बड़ा सा हमने एक 40-50 पेजेस का पूरा PDF बनाया, अपना रिसर्च पेपर बनाया, फिर उसको सेंड किया. सो इफ यू रियली इंटरेस्टेड इनटू इट और इफ यू वांट टू ऐड इट इनटू योर रेज्यूमे, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट. And even after publishing, even if your research paper does not get published, it is completely fine. Get it, vet it through one of your faculty member and so, ठीक है, and they'll help you with the research paper and everything. The last thing that is important for co-curriculars is your webinars and workshops. For example, let's say आपके कॉलेज में कोई वर्कशॉप हो रही है किसी भी टॉपिक पे, ठीक है. लेट्स से अभी सिंपल किसी प्रोफाइल बिल्डिंग पे कोई वेबिनार हो रहा है आपके वहाँ पे, या वर्कशॉप हो रही है, एंड यू हैव अटेंडेड दैट वर्कशॉप या वेबिनार, तो यू कैन इवन एड अबाउट दैट इन योर co-curriculars, बिकॉज एनीवे दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, योर करिकुलर्स. ठीक है जी. Zero internship, will I get placed with the profile in IIMs? And it's, yes, Naveen, you can definitely get placed with this profile as well, because there were people who were in the same position as you are right now, but then you get enough time in IIM as well to build your profile, right? Because then you get a lot of opportunities for live projects, for internships once you're into IIM. So that is when you can just, put in a little more effort than others are putting and build your profile. Coming to the next thing, that is experience. अब experience की जब हम बात करते हैं, तो सिर्फ फुल टाइम जॉब नहीं आता है. अगर आप उनमें से हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम में कुछ भी चीज़ें आ सकती है, एज स्मॉल एज लाइक आई इवन डिड होम ट्यूटरिंग, बिकॉज आई ऑलवेज लव्ड टीचिंग. और मतलब मुझे खाली बैठना नहीं पसंद है, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना पसंद है. तो अगर आप इफ़ यूर ट्यूटरिंग, या फॉर लेट्स से यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या तो फिर यू आर अ फ्रीलांसर, मतलब लेट्स से इफ यू आर समवन हु इज वेरी गुड विद एडिटिंग वीडियोस एंड एडिट वीडियो ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, एंड दिस वर्क वुड कम अंडर फ्रीलांसिंग. और इफ यू आर समवन हु इज टू मच इनटू मार्केटिंग, ठीक है, आपको मार्केटिंग के बारे में सब कुछ पता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में स्पेसिफिकली सब कुछ पता है, सो यू आर हेल्पिंग स्टार्टअप्स विद देयर डिजिटल मार्केटिंग एंड सो ऑन. सो दीज ऑल वर्क्स आर नॉट फुल टाइम जॉब्स, राइट, बट दिस इज पार्ट टाइम, है ना. और फ्रीलांसर में और पार्ट टाइम में क्या डिफरेंस है?
फ्रीलांसिंग इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, लाइक वीडियो एडिटिंग. वीडियो एडिटिंग में आप चार्ज कर रहे हो पर वीडियो, सो दैट्स फ्रीलांसिंग. देयर इज नो कंपल्शन कि आपको पूरे महीने भर काम करना है. इट इज जस्ट दैट कि आप वीडियो वाइज काम करने हैं. समझ में आती है इतनी बात? देन द फोर्थ थिंग इज साइड बिजनेस. साइड बिजनेस का मतलब सिंपल सा इतना है, फॉर एग्जाम्पल आपका घर का कोई बिजनेस है, कपड़ों का या किसी का भी होटल है या कुछ है, एंड यू आर स्पेंडिंग सम टाइम देयर एज वेल. ठीक है, तो आप वो चीज भी अपने में, और सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो इट इज कंप्लीटली फाइन, बट यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ स्किल सेट दैट विल हेल्प. ठीक है, इज इट फाइन नाउ? Am I audible to you nicely? Audible to you nicely? Then we have Arth Shrestha Shetty asking, ma'am, if we do course at Upgrad Digital Marketing from MICA. So, yeah, definitely. What do you want to say as in? Arthasheshta, can you please write your comment in one, at once? Yeah, fine. ठीक है जी. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि सिर्फ एक्सपीरियंस में अगर फुल टाइम जॉब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजें और ऐड नहीं कर सकते. और भी चीजें हैं विच आर नाउ गेटिंग एडेड अप एंड यू कैन डेफिनेटली एड दैट अप. ठीक है जी, ओके फाइन. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, नाउ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना आपके स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि स्कूल में हाउस कैप्टन्स होते हैं, या तो फिर हो सकता है कि आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, या आप हेड गर्ल थे, या हेड बॉय थे. तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें जो आपने स्कूल में की है, यू कैन डेफिनेटली एड ऑल ऑफ दिस इनटू पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फिर आप कॉलेज में आए, कॉलेज में भी कुछ ना कुछ काउंसिल तो होता ही है, राइट? तो इफ यू वर अ पार्ट ऑफ इट और यू आर अ पार्ट ऑफ इट, डू नॉट हेसिटेट टू एड दैट एज वेल. फिर कॉलेज में, स्कूल में अलग अलग क्लब्स होते हैं, लाइक नेचर्स क्लब हो गया, देन वी यूज्ड टू हैव साइंस क्लब, फिजिक्स क्लब. साइंस में भी अलग अलग क्लब्स होते हैं हमारे यहाँ पे. तो इट डिपेंड्स. तो अगर आप इन क्लब्स के मेंबर भी है, फॉर एग्जाम्पल नॉट एट एनी पोजिशन लाइक सेक्रेटरी और हेड और सो, मेंबर भी अगर आप हैं इन क्लब्स के, इट इज कंप्लीटली फाइन, यू कैन एड दैट एज वेल. ठीक है जी. उसके बाद सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में एक कोई बहुत बड़ा सा इवेंट हुआ. तो इवेंट अगर होता है तो एक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी होती है, राइट, इवेंट की. सो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, well and good. Even if you're not a part of that organizing committee or the team, it is fine. You can volunteer. Volunteering तो हर किसी को, हर किसी को मिल जाता है volunteer करना. तो कमिटी के लिए तो अच्छी बात है, जितने ज़्यादा volunteers होंगे the better the program will be organized, राइट? तो कुछ नहीं तो अभी भी अगर समय बचा है, इट्स जस्ट मार्च, राइट? और अगर आप अपने थर्ड ईयर में हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो अभी भी कॉलेज में चल रहा होगा. If you still get an opportunity to contribute, तो please do that. अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, नो वरीज, एटलीस्ट उस दिन जाके वॉलंटियरिंग कर लो. इवन दैट विल हेल्प. यू कैन एटलीस्ट एड इट ऑन कि देयर वॉज एन इवेंट जिसमें 7 से 8 हज़ार लोग आए थे एंड आई वॉज इन द वॉलंटियरिंग और आई वॉलंटियर्ड. I was in the volunteering team, by the way. ठीक है जी. The last thing is the committee. Committee मतलब अलग अलग कमिटी होती है. For example, let's say if I talk about MBA colleges, so there are different committees like cultural committee, then there is placement committee, then there is placement preparation committee, then there is entrepreneurship committee and so on. तो जितनी भी committees होती है, if you are a part of it, do not hesitate in informing the interviewer about the position of responsibility that you hold in that particular committee. As simple as that. ठीक है जी, फाइन. ठीक है जी. कमिंग टू एक्स्ट्रा करिकुलर्स अगेन, तो जी यहाँ पे आपका आता है डेवलपिंग अ हॉबी. ठीक है, ये आपके एकेडमिक्स से कनेक्टेड नहीं है. तो उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज आप करते हैं एकेडमिक्स के अलावा, जो आपको पर्सनली इंटरेस्ट करती है, उन सभी को आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, लेट्स से इफ आई हैव सीन पीपल, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एन इंडिविजुअल इज नॉट हैविंग एन हॉबी. ठीक है, हॉबी तो सबकी होती है, राइट? दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ इंटरेक्टेड विद एंड दे टोल्ड मी कि दी हमारी कोई हॉबी नहीं है. So if you don't have an hobby, it is completely fine. You can develop one hobby. Still, it can be as small as just reading books.
ठीक है. It can be anything that interests you, that motivates you, ठीक है, that pushes you and fills you with a lot of positivity. As simple as that. So develop a hobby because that is required. इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं आपको हॉबी के बारे में, and that's a very generic question. मतलब it's very obvious question. ठीक है. Then if लड़कों का बहुत ज़्यादा होता है ना, they are into sports. Like yeah, so if you have been into sports and आपने सपोज आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में अगर आपने अपने इंटर स्कूल क्रिकेट कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, या आपने इंटर सिटी में पार्टिसिपेट किया है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल खेली है, सो मेंशन अबाउट दैट. देन इफ यू हैव अटेंडेड सम एग्जीबिशन, जैसे बहुत बार आपके सिटीज़ में बुक है ना, अलग अलग टाइप के एग्जीबिशन होते होंगे, तो उन एग्जीबिशंस को भी अगर आपने अटेंड किया, यू लाइक अटेंडिंग दोस because you get something in return as a value, right? So you can definitely mention about those exhibitions as well. Then NGOs होते हैं ना, there are people who are too much into social work, right? जो कि non profit organizations होते हैं, right? तो वहाँ पे भी आप आराम से अगर contribute कर रहे हैं, तो you can add about those as well in your extra co-curricular वाला जो पार्ट रहता है आपका CV वहां पे. ठीक है जी. देन द नेक्स्ट पार्ट इज योर ब्लॉग. ब्लॉग बेसिकली इज लाइक देर आर पीपल हु आर टू मच इनटू राइटिंग. तो कोरा पे उनका कोई एक पूरा पेज होगा, या तो फिर आप कहीं पे अपना खुद का एक ब्लॉग पेज है आपका. तो स्टार्ट मेंशनिंग ऑल ऑफ दिस इन योर एक्स्ट्रा को-करिकुलर्स. ठीक है जी. Vipul is saying, Ankusha, I am fresher. Even I am a fresher. Do not worry about that. It's completely fine. Anil has to say something. Ma'am, if we do course from upgrad by paying 1 lakh for digital marketing, why do you have to pay 1 lakh for a course like digital marketing? Do not pay that much. There are a lot of free digital marketing ke courses, Anil. And if you want me to mention about that, I'll definitely do that. I'll definitely do that. Ma'am, low percentage in 10th and 12th, can we get baby IIMs? Yes, you can get. But मतलब कितना लो है और क्या कैटेगरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. yes you can get good college, मतलब at least it should not be as low as in 50s. तब तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर एवरेज है, लेट्स से 6-7 में है, तो स्टिल यू हैव अ चांस. मीन या. ठीक है जी. हाय थाने ऑफिशियल कबड्डी. माय गॉड, what kind of name do you guys have? ठीक है. Then the last thing is जब co-curriculars की बात आती है, extra co-curriculars की, तो it is not important that they should be certified. But when I was talking about co-curriculars, it is always preferred that you have some certification. Why is certification important? Because अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है या ये चीज़ मैंने की है, तो you need a reason or you need something to back it up. And for backing it up, it is important to have a certificate. As simple as that. ठीक है जी. Vipul, if you're planning to prepare, you can prepare from Unacademy. I am having sessions in Unacademy wherein I'm mentoring people. And if you want discount, you can use my coupon code ANP22. You can get maximum discount with the help of this code. ठीक है जी. All right. Then coming to how you can build a strong LinkedIn profile. ICICI summer intern, ICICI Bank, then IIM Rohtak 23, YouTuber 14K plus subscriber, freelance host, former radio jockey, influencer marketer. तो ये सब जो चीजें हैं, this come under headline. Headline में sentences नहीं लिखने हैं कि important है या आपकी USP है. Only mention those things in the headline. क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? ठीक है जी. इसके बाद हेडलाइन एक बार आपने मेंशन कर दिया. द सेकेंड थिंग दैट विल कम ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल विल बी योर अबाउट सेक्शन. I'll wait to let me know. Let me know guys once it is fine. Ma'am, 10th 69, 12th 59, graduation 91, international tug of war player and state level cricket player. Can I get baby IIM? Yes, Anil, you can get. Yes, you can. Digital marketing channel name, certificate
कोर्स का नाम आप पूछ रहे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल एक फ्री एक कोर्स है अलीशा, which is provided by Google and which is done by a lot of people, and it has good rating as well. Complete that course. Ma'am, please answer, should I give CAT or not because 12th में 59 है. By the way, बहुत बहुत स्ट्रेस में हूँ. बिल्कुल कैट में अपियर करो और अपना 110% दो, बिल्कुल हो जाएगा. डू नॉट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स. मैम, अरुण शर्मा से इंसिपिएंट कराना ठीक रहेगा. व्हाट इज इंसिपिएंट? वेट मैम, लैग. ओके ओके, वेटिंग. ओहो, टुडे इज अ बैड डे. कहीं स्पीड तो बढ़िया है, 25 mbps आ रही है स्पीड तो, बट इट इज फ्लक्चुएटिंग, आई गेस दैट्स व्हाई. फाइन नाउ. ओके, ग्रेट. फाइन. सो देन जैसे ही आपका कौन सा वाला पोर्शन हो जाएगा, हेडलाइन वाला पोर्शन हो जाएगा, तब आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आएगा अबाउट वाला सेक्शन. अबाउट वाला सेक्शन आधे लोग तो डालते ही नहीं है अबाउट, आई डोंट नो व्हाई. बट क्योंकि अब मैं आपको स्क्रैच से लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना सिखा रही हूँ एंड हाउ यू कैन बिल्ड इट स्ट्रॉन्ग, तो सबसे पहले आप अपनी हेडलाइन अपडेट करेंगे. हेडलाइन के बाद अपने अबाउट सेक्शन में जाएंगे. अबाउट सेक्शन should. Parag is saying I have worked X in 2 domains, 12th month as a maintenance manager engineer and 8 months as a logistic executive. So can I combine both as a total experience in CAT form or and placements? Yes, yeah, definitely. Is there a lag, guys? Do you want me to wait? Do let me know, guys, if you want me to wait or if it is fine now. Is it fine now, guys? Or do you want me to disconnect and connect again? What is it? There's a lot of lag. Oh, आफ्टर 12 गैप ईयर IIM पॉसिबल है? जी हाँ, एक गैप ईयर है ना 12th के बाद. मैम, आपके बैच में ऐसा कोई है? BWD क्या लिख रहे हो आप लोग, पहले तो ये बताओ. PWD कैंडिडेट्स होते हैं 10 10 12 जिनका स्कोर कम है. वैसे सबके स्कोर तो मैंने देखे नहीं अपने कॉलेज के बच्चों के, बट देर आर पीपल हु हैड लो स्कोर्स इन द 10th and 12th बट स्टिल they made it into an IIM. Fine now, but last 1 minute ऑडियो नहीं आया. ओके, थैंक यू आयुष. तो जी मैं बात कर रही थी कि अबाउट जो सेक्शन होता है ना आपका, अबाउट सेक्शन शुड बी अ समरी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर. ठीक है, अबाउट में आप मेंशन करते हैं चीज़ें जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है या थिंग्स टू विच यू लुक फॉरवर्ड टू, ये सब चीज़ें आप मेंशन करते हैं अपने अबाउट में. जैसे कि स्क्रीन पे मैंने अपने लिंक का अबाउट लिखा हुआ है कि यू नो आई एम एन एम्बिशियस एंड अ गोल ओरिएंटेड प्रोफेशनल विद अ डीप इंटरेस्ट इन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड रिसर्च. Since I was a radio jockey, so I also mentioned that from being a radio jockey to becoming a part of corporate, carrying forward the same enthusiastic spirit to hustle and achieve new heights. ठीक है जी? Okay, fine. Great. Now moving forward, second, जैसे आपने अपना हेडलाइन सॉर्ट कर लिया अपना, ठीक है, उसके बाद आपने अपने अबाउट लिख लिया, उसके बाद आएगा आपका एक्सपीरियंस वाला सेक्शन. अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस में सिर्फ आपका फुल टाइम वर्क नहीं आता है गाइस, उसके अलावा जो छोटे छोटे पार्ट टाइम काम है ना, तो वो चीज़ें भी आती है. या आपका कोई सोशल मीडिया क्या बोलते प्रेजेंस है ना, तो वो चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो. I guess there's still a lag.
We're almost towards the end of the session. I guess let's start this. Let's end the session because there's a lot of lag. Ma'am, 2 year gap year a health issue. Okay, Vipul, there are people who get into an IIM with 2 year gap year as well. बट आपको बस बताना आना चाहिए कि गैप ईयर क्यों था. काफी लैग हो रहा है. ठीक है आयुष. ओके फाइन 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 गॉट इट. लेट्स डू वन थिंग. Let's end the session because there's no point. There's a huge lag. What I can maybe do for you all is I can share the link of this entire PPT and that can be added in the description. ठीक है, ये अभी बता दो. If it is fine, I'll continue. Otherwise, we'll end the session because I guess there's no point in continuing the session if there's a huge lag. Let me know what is the situation क्योंकि बिना आपके comment के मुझे समझ नहीं आएगा. If it's fine, continue. I should continue. Okay, fine. ठीक है जी, ठीक है. Last बार we'll try. Otherwise, I'll end the session. ठीक है. Okay जी. फाइन. सो आपके हेडलाइन के बाद आपका आएगा अबाउट का सेक्शन. आपके अबाउट के सेक्शन के बाद आएगा आपका एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस में सिर्फ मैंने पहले कहा ना, आपका फुल टाइम चीज़ें नहीं आती. फुल टाइम कहीं पे वर्क किया है सिर्फ वही ऐड नहीं होगा, बल्कि अगर आपने फ्रीलांसिंग कहीं की है या किसी सोशल मीडिया में आपका अच्छा इन्फ्लुएंस है या रीच है या प्रेजेंस है, दैट कैन बी एडेड. या आपने कहीं पे पार्ट टाइम जॉब किया, इवन दैट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्सपीरियंस में अपना फ्रीलांस होस्ट, बिकॉज आई वॉज अ होस्ट सिंस क्लास 6th. तो I can even host events on LinkedIn online, right? So I've added that. Then I've added that I am a content creator, I'm a YouTuber. ठीक है, उसके बाद है फिर I did an internship with Spice Root Finance in HR, तो वो एडेड है. देन आई डिड माई समर इंटर्नशिप विद ICICI बैंक, तो वो भी एडेड है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. उसके बाद आएगा अपने एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशन का सेक्शन. इस सेक्शन में हम मेंशन करेंगे किया हुआ है जहां से भी आपने स्कूलिंग की हुई है. एज सिंपल एज दैट. अब इन दोनों सेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? सिर्फ उस चीज के बारे में हेडलाइन डालना नहीं, आपको उसके बारे में भी डालना है. यू हैव टू राइट अबाउट इट. लाइक यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ मैंने फ्रीलांस होस्ट जरूर डाला है. उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं एंड हियर यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन फॉर सी मोर. सो अगर मेरा लिंक्डइन प्लेटफॉर्म अभी मैं खोलती तो वहां पे अगर सी मोर पे क्लिक करती तो देयर मस्ट हैव बीन 2-3 मोर पॉइंट्स. ठीक है, तो आपको डिस्क्राइब भी करना है कि आपका अगर एक्सपीरियंस XYZ पोजीशन में है, XYZ कंपनी में है, तो आपने क्या काम किया है, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है जी. सेम गोज विद कंटेंट क्रिएटर वाली चीज. तो ये चीजें आपको मेंशन करनी जरूरी है. सेम गोज विद योर एजुकेशन वाला पार्ट. एजुकेशन में क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हियर आई हैव मेंशन्ड दैट भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से अपना मैंने BCom कंप्लीट किया है और वहां पे मैं एक्टिविटीज इन सोसाइटीज में थी. आई वॉज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स क्लब. ठीक है, आई वॉज ऑल्सो द क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड देन आई वॉज अ होस्ट ऑल्सो. आई वॉज अ डिबेटर. आई हैव वन अ लॉट ऑफ इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशंस. तो उसके बारे में मैंने मेंशन किया. सेम गोज विथ मैंने स्कूल के टाइम पे भी जो 50 ट्रॉफीज जीती एंड सो ऑन XYZ चीजें की हैं, वो सब भी वहां पे मेंशन किया है. ठीक है, ऑल राइट. उसके बाद आता है आपका फीचर्ड. अब देखो, वंस योर प्रोफाइल इज बिल्ड, ठीक है, ऑन योर लिंक्डइन, उसके बाद आप पोस्ट करना चालू करेंगे. पोस्टिंग इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन ग्रो ऑन लिंक्डइन. यहाँ पे भी अगर आप मेरा रीसेंट पोस्ट भी अगर देखते हैं तो अंकुशा पाटिल पोस्टेड दिस 10 years बैक. 10 years बोल रहे हैं, सो सॉरी, 10 hours बैक. ठीक है, 10 घंटे पहले ही मैंने ये पोस्ट किया था. तो जितना ज्यादा आप रेगुलर रहेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे ऑन लिंक्डइन. ठीक है जी. उसके बाद इफ देर आर सम पोस्ट विच यू थिंक आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ and for people who visit your profile to know about it, then you can feature it.
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो ऑब्वियसली कोई भी अगर इंसान XYZ आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करता है तो वो ऐसा तो नहीं करता कि पूरे आपके पोस्ट और ये सब कुछ दिखेगा, नो ठीक है, ऊपर ऊपर देखता है, आपकी हेडलाइन देखता है, आपकी अबाउट सेक्शन देखता है, एक्सपीरियंस देखता है एंड सो ऑन. बट इफ यू हैव फीचर्ड पोस्ट इन इट, वो बहुत बढ़िया चीज होगी. तब आप क्या कर सकते हैं, आपके जो बेस्ट चीजें जो आपने की हुई है दैट कैन बी शोन. आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया, ठीक है जी, और लिंक्डइन डेफिनेटली आप मतलब MBA के बाद तो हमेशा से ऐसा होता है दैट यू नो when you submit your CV online, right? So there's an option for LinkedIn profile as well. There's a link attached in the CV. तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपकी LinkedIn प्रोफाइल खुल जाती है, ठीक है. तो HR जब देखेगा आपकी प्रोफाइल, he'll be very impressed if you have this featured post as well, and if you see you posting regularly. So that indirectly tells about the kind of individual you are. ठीक है जी. लास्टली व्हाट यू कैन डू इज सर्टिफिकेशंस. अब सर्टिफिकेशंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिंस यू आर प्लानिंग टू डू MBA, अब MBA एक ऐसी चीज है जहां पे डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आते हैं, ठीक है. कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, ठीक है. तो अब इन सब को एक ही लेवल पे लाने के लिए कैसे हम ये जो गैप है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर अ डॉक्टर, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फाइनेंस. नाउ हाउ टू ब्रिज दिस गैप? To bridge this gap, you can do certifications. As simple as that. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कॉलेज अब खुल रहा है लेट्स से जुलाई 5th को, ठीक है, तो आप अभी से लाइक नाउ तो यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, राइट? तो आपका मेन फोकस तो कैट प्रेपरेशन होना चाहिए, बट साइमल्टेनियसली व्हाट यू कैन डू इज कि आप कोई ना कोई कोर्स साथ में कर रहे हैं, उडेमी पे कर रहे हैं, या लिंक्डइन पे इतने सारे फ्री सर्टिफिकेट को फ्री सर्टिफिकेशन है, आप उनको कर रहे हैं. तो मार्केटिंग का कुछ कर लो, फाइनेंस का कर लो, ऑपरेशन का कर लो, HR का कर लो, सो दैट यू हैव समथिंग इन योर CV अंडर सर्टिफिकेशंस. एंड अगर ये चारों चीजें नहीं भी करते हो, भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके. MBA के फर्स्ट ईयर में आपको ये सब कुछ सीखने को मिल जाएगा. But the two things that you should definitely do before you enter any MBA college are first Excel. हर जगह MBA में आपको Excel यूज करनी है, ना सिर्फ आपका MBA, इनफैक्ट जितनी भी इंटर्नशिप्स आप करेंगे, एंड आई एम होपिंग कि अभी मैं जॉब भी करने जाऊंगी तो वहां पे भी Excel विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट आई विल बी यूजिंग. ठीक है, तो एक्सेल जरूर सीखें. सेकंड इज योर पावर पॉइंट. पावर पॉइंट अपने आप रेलिज में भी सीखेंगे, बट एटलीस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू योर MBA आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए पावर पॉइंट, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशंस इन ऑल ऑफ दैट. रेस्ट यू विल एनीवे लर्न. ठीक है, टू दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड. इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग फाइल बिल्डिंग, डू लेट मी नो एंड आई टेक ऑल द डाउट्स right here, right now. Yes, tell me if you guys have any doubts. Vipul Parag said, I didn't get the answer due to lag. Can you please repeat my answer? I have worked X in 2 domains, 2 months as a maintenance engineer and 8 months as a logistic executive. So can I combine both as total experience? Yes, Parag, you can combine both. विपुल सेड, मैम अरुण शर्मा से बिगनिंग करना बेटर रहेगा. यस, बिल्कुल. अगर इफ यू प्रिपेयरिंग, इफ यू सेल्फ प्रिपेयरिंग, तो अरुण शर्मा बिल्कुल इज नाइस बुक. यू कैन गो अहेड एंड यूज अरुण शर्मा. Solve its difficulty level 1 and difficulty level 2. It's a good book. I've solved it myself. So yes. और कोई डाउट है? Or else we can end the session. I hope you all enjoyed the session. If you did enjoy the session, do let me know in the comments below and like the session. That's it. And if there is any other session that you want me to take on, do let me know in the comments below. I'll definitely take a session on that and I'll be more than glad to do that. Yeah. कोई बात नहीं, it's okay. If you have done a full-time job, अलग अलग जॉब रोल में, तो इट इज कम्प्लीटली फाइन. आप दोनों को क्लब करके लिख सकते हैं कि आपका XYZ का XYZ मंथ का एक्सपीरियंस है या रहा है. Much needed session, ma'am. I was thinking to update my LinkedIn profile. Great. Do that right away, Ayush. And also we have a detailed profile building class in the batch that you have joined, Bullseye. So do not worry about that. You're going to get more content on the same. Bye, ma'am. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
But are they saying Coursera certification work? Yes, it does. In fact, Coursera पे तो you get student ed also. मतलब मैंने आज तक तो कभी भी ऐसा नहीं किया है कि Coursera में पैसा दे के courses किए हैं. तो मैंने हमेशा student ed लगाई है. So there's one process of it, and do that. You can do courses on Coursera for free. Bye everyone. I hope you enjoyed the session. Thank you very much. Thank you for attending. And let's end the session.